Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So in the previous video, we have looked about various presumptive assays that are usually carried out on the blood, including the Kastle-Meyer test, TMB test, and leukomalachite green test, and so on. This is the third part of the same video series, which is the identification of bodily fluids. That is, we were talking about blood. In this video, we'll be looking at the false positive and the false negative results. Firstly, we'll understand what is false positive and false negative results in the presumptive test, and then various factors that causes these types of inferences in the presumptive test. So, firstly, let's understand what is a false positive result. As the name suggests, let's split this term into two parts, false and positive. False means negative, or we can say not true, which is not true, and positive means the test is coming positive, but it is not due to the presence of blood or the main component of that particular stain, but due to some other thing. So combining, we can understand that false positive are the results that we get in the presumptive test, not because of the major component or major identifying character of that particular biological fluid, but because of some other factors, and these factors we'll be discussing in the next slides. Similarly, false negative. Again, here what we are getting is the negative results. Though a major component or the major identifying factor is present in the biological fluid, but we are not getting positive results for it due to some interfering factors that give the results as negative instead of giving it positive. So I hope you have understood about false positive and false negative results. So let's understand it more clearly. So the presumptive tests are not specific to blood. That's why we are saying that they are not specific, because presumptive tests only give the possibility that this particular stain could be blood, not this is blood. We cannot say it in a conclusive manner. We can only get a prediction or possibility that particular stain could be blood. Only thus and possibly can lead to the observation of false positive or false negative results. We can get a false positive and the false negative results due to the presence of certain factors like the oxidants, the peroxidases, and the reductants. So let's see how. So these are the factors. The first factor are the oxidants. Now, what are oxidants? As the name suggests, I've told you in the previous videos also, oxidants means an oxidizing agent which oxidizes the substrate, but itself it gets reduced. Similarly, reductants. Reductants are reducing agents which itself get oxidizes, but it reduces the substrate. And the third one are the plant peroxidases. So oxidants, due to the presence of certain oxidants like the copper, nickel salts, household bleaches and cleaners in the environment from where we are picking up that particular evidence, or the coloring products. These oxidants could be added in that fluid, biological fluid, and it can give false positive results. Similarly, there are certain plant peroxidases that are also responsible for the providing false positive results, and the reductants जैसे lithium and zinc हो गया. So let's understand these, how these factors they interfere in the final results of the presumptive assays. Let's understand first about the oxidants. So oxidants क्या होते हैं? Chemicals that are strong oxidants may cause a false positive reaction. कौन कौन से chemicals ये कैसे act करते हैं? ये instead अपना, suppose we are talking about blood, right? So heme catalyzes the usual normal reaction, due to which we get pink color as results in the phenolphthalein test or blue-green color in the TMB test. But if these chemicals are present, they will catalyze the oxidation reduction reaction even if the heme is not present, and they will give false positive result. I hope you are understanding what they are doing. They are working they're doing the work of heme. Mainly, they're catalyzing the reaction, due to which we are getting the false positive results. So examples of these oxidants are the metal salts, जैसे कॉपर हो गया, निकल सॉल्ट्स, हाउसहोल्ड ब्लीचेस हो गए, हाइपोक्लोराइट आयंस, हेयर कलरिंग प्रोडक्ट्स हो गए. इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है
जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, एंड दे वर्क एज ऑक्सीडेंट एंड गिव द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. नाउ हाउ वी कैन save ourselves from getting false positive results and giving the wrong opinion? We are doing the two-step catalytic process in the usually in the presumptive assays. First step में we are putting the what we are putting the normal solution. Substrate डालते हैं हम अपने जो सैंपल है उसमें, एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या डालते हैं, ऑक्सीडेंट डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज H2O2, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, द सबस्ट्रेट इज अप्लाइड फर्स्ट टू द सैंपल, फर्स्ट स्टेप में. सेकेंड में कलर चेंज अकरिंग बिफोर द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंडिकेट्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन. हम फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट से कैसे बच सकते हैं? हमने सपोज ये हमारा वी आर टेकिंग दिस स्लाइड, यहाँ पे हमने एक बायोलॉजिकल फ्लूइड डाला. फर्स्ट स्टेप में हमने इसमें अपना सबस्ट्रेट डाल दिया. सपोज वी आर टेकिंग ब्लड, तो ब्लड के टेस्ट के लिए हमने फिनोफ्थलीन डाल दिया, कलरलेस वाला. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, तुरंत ही रिजल्ट मिल गया हमको इसके, हमने अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी डाला ही नहीं है, तो ये वाला जो रिजल्ट मिलेगा ना हमको पिंक कलर का जो आएगा, दैट विल बी अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एंड इफ अ कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द रिजल्ट इज ट्रू पॉजिटिव. सो यू हैव टू नो दिस कि कुछ जैसे हम H2O2 डालेंगे, and if we are getting pink color in the phenolphthalein test, that is a true positive. But before adding H2O2, just after adding the substrate, we are getting the results, that is a false negative. And that false negative result could be due to the presence of oxidants that are present in the environment, और जो कि अपने evidence के साथ pick हो गए हैं. So I hope oxidants are clear. Now the plant peroxidases. सो प्लांट पेरोक्सिडेजेस भी सिमिलर वर्क करते हैं जैसे अपने ऑक्सीडेंट्स वर्क करते हैं. वो कैटलिसिस करते हैं, भले हीम प्रेजेंट ना हो, देन ऑल्सो दे विल कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दे विल यील्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द सिमिलर मैनर द वे द ऑक्सीडेंट्स आर वर्किंग. सो प्लांट पेरोक्सिडेजेस यूजुअली हीट सेंसिटिव होते हैं. व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड आवर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स? हीट सेंसिटिव होते हैं एंड मे बी इनएक्टिवेटेड बाय हाई टेम्परेचर. तो या तो हमें अपने सैंपल को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दीज प्लांट पेरोक्सिडेजेस. एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग द हाई टेम्परेचर, अपने हीम को कुछ ना हो, तो जो हमारी हीम जो मॉलिक्यूल होता है इसकी क्वालिटी होती है, इट इज रिलेटिवली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. सो दीज सैंपल्स दे कैन बी रीटेस्टेड आफ्टर हीटिंग. तो यहाँ पे हमको एक प्रिकॉशन लेना है. वी हैव टू गेट रिड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट पेरोक्सिडेजेस. वी हैव टू हीट द सैंपल. इससे हमारे हीम मॉलिक्यूल को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. बाय बिकॉज इट इज टेम्परेचर स्टेबल. हाई टेम्परेचर्स को वो हाई टेम्परेचर्स में इट रिमेन स्टेबल, वो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं खोता है. सो व्हाट विल हैपन, प्लांट पेरोक्सिडेजेस विल बी इनएक्टिवेटेड ड्यू टू दिस हीटिंग प्रोसेस, एंड इसकी वजह से वी कैन गेट रिड ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट पेरोक्सिडेजेस. एंड द थर्ड पार्ट विल बी द रिडक्टेंट्स. सो ऑल्दो ये बहुत कॉमन नहीं होता, इट इज नॉट वेरी कॉमन टू गेट रिडक्टेंट्स और द फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस. ये बिल्कुल ऑपोजिट में वर्क करते हैं. जैसे फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस हमको ऑक्सीडेंट्स और प्लांट पेरोक्सिडेजेस के प्रेजेंस में मिलते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्टेंट्स विल बी गेटिंग द फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन. कोई स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट आ गया हमारे एविडेंस के साथ, सो उसकी वजह से हमको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं. वो हीम की जो एक्टिविटी होती है ना उसको सप्रेस कर देता है, कैटालिसिस नहीं होने देता है. एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, इट विल नॉट लेट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू अकर, and due to which we will not get our desired results. So strong reductants क्या क्या हो सकते हैं, हमारे मेटल आयंस हो सकते हैं, लिथियम एंड जिंक, ये भी इनहिबिट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जिसकी वजह से वी कैन गेट फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आपको किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज. फर्दर आपका कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, वी आर वेरी ओपन टू फीडबैक्स एज वेल, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में वील बी लुकिंग एट द कन्फर्मेटरी एसेज विच आर यूजुअली द माइक्रोक्रिस्टल टेस्ट, जो कि हम ब्लड स्टेन पे परफॉर्म करते हैं फॉर इट्स confirmation that that particular stain is blood. So I hope you all like this video. Share it with your friends and also subscribe to this channel for regular updates. And thank you very much for joining us. Stay tuned.